There's a new film that everyone's talking about, a new KGF, a new Pushpa. It's a Kannada film called Kantara, and it's now hit theatres in Hindi as well because of the craze, the following, and the amazing reviews that this film got. We're going to be talking about this film. Joining me on this broadcast is filmmaker and actor Rishab Shetty, as well as actor Saptami Gowda, both of whom have done a fabulous job in the movie and are receiving accolades all across. Rishab, I'd like to begin with you. Big congratulations. Did you expect this response? Thank you so much. ये दो चीजें कभी भी नहीं था मेरे पास, जो एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट. सो ये मुझे लगा कि एक ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इतना बड़ा जो सक्सेस हो रहा है अभी, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था. Saptami, were you overwhelmed when you saw the kind of response? Because this film actually released about 2 weeks back in Kannada. It's because of the massive response that you got that now you are forced literally to dub it in Hindi and release it again. Yeah, I mean, yes, it is still very overwhelming, and then it's still, the feeling hasn't just sunk in yet. That we're all very happy and we're proud that the movie is taking off this way and people are loving it. So the amount of effort and the amount of love we put into it while making the movie is paying off. So it is overwhelming. At the same time, we're all very proud of it. And I think it's so well deserved. I feel so proud when I hear of these kind of movies. This year has been amazing for all of us, hasn't it? I started off talking about Pushpa. I started off talking about KGF, Bahubali. Rishab, your film is now in that same league. तो इसलिए बोला था मैं, ये एक्सपेक्टेशन एक्साइटमेंट नहीं है मेरे फिर करके. But you see all the messages. Kicha Sudeep has messaged on this. So many people, really. Prithvi Raj has put out a message also. Raj and DK, they appreciated your film. Many of them have come forward to say that this is one of the best films they've seen in years. How did it feel when you got these responses from so many veteran actors, filmmakers? Feels good. मतलब ये अभी जो बॉलीवुड, टॉलीवुड, सैंडलवुड, ये सब था पहले. अभी जो इंडियन सिनेमा बन रहा है, सो इस जनरेशन में हम लोग वो एड्रेस कर रहे हैं. ये लैंग्वेज का बैरियर छोड़ के हमारा जो रीजनल रूटेड एक कहानी हम लोग बताया, तो वो दुनिया के सब लोग ऐसे ओपनली ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोग सक्सेस कर रहे हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू ಥ್ಯಾಂಕ್ ಕನ್ನಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, क्योंकि वो लोग इतना पब्लिसिटी किया, इतना माउथ पब्लिसिटी हुआ था, वाइल्ड फायर जैसा ऐसा स्प्रेड हो गया. सो उन लोगों के वजह से अभी हिंदी में भी रिलीज हो रहा है. नॉन कन्नड़ा लोगों को भी वो लोग सजेस्ट किया, लेके जाके पिक्चर दिखाए हैं. सो वो एक विचार मैं मेंशन करना चाहता हूँ. सो इसलिए इतना बड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है. एंड अभी जो बैरियर छोड़ के एक रीजनल रूटेड हमारा जो कल्चर क्या है, हमारा सिस्टम क्या है, हमारा बिलीफ क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था एक फिल्म में लेके आने के लिए. सो वो भी मैं एक फोकलोर जैसा लेके आया था. जो कोस्टल कर्नाटक का जो रिचुअल है, जो दैवाराधने भूतकोला बोलते हैं हम लोग, शायद आप भी जानते हो. सो No, so I wanted to ask you about that, Rishab. Jaise, you're talking about these cultures, like the sentiments of Bhuta in coastal Karnataka, the sport of Kambala. How do you get Hindi audiences to connect with these cultures, these traditions? Can they understand that? Yeah, definitely. Basically, it's a conflict between human and nature. So, मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो संघर्ष है, वो बताने जा रहा हूँ मैं. So, प्रकृति और मनुष्य का बीच में जो ब्रिज है, वो हम दैव मानते हैं. सो वो एक एनर्जी, एक प्रकृति का बीच का जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम लोग सोसाइटी का, एक समाज का एक समानता रूप में लेके आने का एक मैसेज भी है उसमें. सो आई ऑलवेज थॉट मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल. सो अभी जो उधर का जो बैकड्रॉप में लिया, उधर का जो कल्चर, उधर का जो रिचुअल्स और बिलीफ, ये सब लेके आके मैं दुनिया को बता रहा हूँ. सो ये सारे यूनिवर्स कैसे लेते हैं करके, लेकिन ऐसा कुछ रिचुअल्स, ऐसा कुछ बिलीफ, ये हर जगह है. नॉट ओनली इन कोस्टल कर्नाटका. तरीका अलग है, जो प्रकार अलग है. सो भारत का हर कोने में, हर गांव में ऐसा कुछ रिचुअल्स रहेगा. सो हम लोग वो मानना पड़ता है कि हमारा लाइफस्टाइल भी वैसा है. सो इसलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस था कि ये दुनिया में
किधर भी जाओ ये संघर्ष तो है. And you know, I think what's great is that people now in many parts of the country will learn about coastal Karnataka. There are so many cultures and traditions that many of us have in our villages, in our towns, that people don't know about. I think this opens doors to what happens in coastal Karnataka, the beliefs there, the traditions there, and just a glimpse really into that. So hopefully it will get people thinking and more curious about it. Saptami, what do you really, do you think stands out about the movie that it's grabbed so much attention and so much praise right now? I think there's an underlying issue that we're trying to talk about in the movie, that is, the human and the encroachment issues. But it's being said in a way that everybody can connect with. Like, for example, there's every element in the movie that you would expect in any other movie. So there's there's humor. There's a lot of humor throughout the movie. There's a beautiful love story. There's a conflict that happens not only externally but within the characters as well. And each character is crafted so well. Like the character graph of each character, there's a justification to every character. And moreover, like, people are talking about the climax, and there's a beautiful climax that happens. And leading to that climax also, there are the way the culture is being used and shown around, just to to bring out that issue that all of us have faced or seen in the world. I think these elements that we've used in the movie, I think people are going to connect with it. So these are the elements, like humor, like I said. Yeah. So these elements help bring out the issue more in a better way. If you look at the film industries, Rishab, there's a lot of talk right now about Bollywood, Tollywood, Collywood, Sandalwood also. And even if you look at the film industries in the South, it's always considered that, Mollywood, Collywood and Tollywood produces great cinema. Sandalwood doesn't do a great job in producing great films. Do you think that narrative at least is changing thanks to your film now, thanks to Vikrant Rona, thanks to KGF and KGF2? Do you think finally that narrative is changing? इस जनरेशन में हम ओके है करके हम सोच सकते हैं, लेकिन भारत चित्ररंग को, अभी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है. बहुत अच्छे महान कलाकार थे, डॉक्टर राजकुमार, डॉक्टर विष्णुवर्धन, शंकर नाग, उससे पहले भी बहुत सारे स्टार्स थे, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे, पुट्टना कनगाल, शंकर नाग जी, बहुत सारे सिलिंग, ऐसा बहुत सारे लेजेंडरी फिल्म भी है. ये बहुत पुराने की बात है कि वो 30 इयर्स पहले इधर से लोग उधर जाके उधर आके कन्नड़ा फिल्म देख के उधर के राइट्स लेके आके रीमेक करते थे. सो उसके बाद बीच में कुछ हमारा कन्नड़ा इंडस्ट्री को मतलब उतना मेन स्ट्रीम नहीं था, इधर उधर अच्छे फिल्म आता था, लेकिन कंसिडर नहीं करते थे. आज आफ्टर केजीएफ के बाद जो लिस्ट बोला आपने, हाँ. जो दूसरा तरीके से एक रास्ता खुला है. एंड लोग भी अभी ये आप बोला ना, ये भी सैंडलवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, ये बॉलीवुड, ये सब छोड़ के इंडियन सिनेमा का रिकॉग्नाइज कर रहा है. अभी वो रीजनल कन्नड़ा का हम कंटेंट किया तो भी लैंग्वेज बैरियर छोड़ के हर जगह देख रहे हैं. वो एग्जांपल है, कन्नड़ा वर्जन हम लोग कांतारा रिलीज किए, सब जगह बहुत अच्छे से चला. बॉम्बे में बहुत कन्नड़ा लोग नॉन कन्नड़ा को लेके जाके पिक्चर दिखाया है. उसके बाद वो लोग सजेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स पढ़ा था मैं. इधर भी शुरू हुआ 10 शो से, लेकिन 2 दिन के बाद 120 शोज हो गया था. दैट इज फर्स्ट स्ट्राइड रीजनल लैंग्वेज का एक फिल्म. मराठा मंदिर जैसा थिएटर में भी पिक्चर डाले हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है. So I think वो सब जा रहे हैं अभी, वो भी पूरे मिलके इंडियन सिनेमा बन रहे हैं. And I think it's all from word of mouth. It's all from social media. Definitely. Definitely. I've read so much about this film. I can't wait to go watch it. Very sadly, I haven't seen it yet. But Rishab, you're saying yes, that right now cinema transcends boundaries, that it's so easily dubbed, it's put out in different languages, but there's a need to also recognize where it comes from, that this is originally a Kannada movie, and that pride also I'm sure you have somewhere. Definitely, because मैं एक हमारा जो सॉइल का, हमारा जो रीजनल और कोर कंटेंट मैं बता रहा हूँ, उसमें भी हमारा जो बिलीफ क्या है, हमारा जो कल्चर क्या है, जो ये सब मेरा वो एक रीजनल कंटेंट बता रहा हूँ. मेरा सोच था कि ये कन्नड़ा में भी
जाना चाहिए, कन्नड़ा में भी लोग देखना चाहिए जो ओरिजिनल कंटेंट किधर से किया है करके। सो कौन सा लैंग्वेज का फिल्म है, किधर का स्टोरी है, ये सब जानना है। लेकिन वो कन्नड़ा ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, वो फिल्म वैसा ही जा रहा है, उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं। सो ये प्लान भी नहीं था थिएट्रिकल डब करके हिंदी में इतना डिमांड आएगा। होम्बाड़े फिल्म्स जो उतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस उतना सॉलिड रख के इधर अनिल तदानी जी भी ज्वाइन हो गए। उसके बाद जो नॉर्थ इंडिया में हिंदी का 2500 स्क्रीन में डाल रहा है। सो सब जगह अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। क्रिटिक्स का भी एक शो थे, उधर भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। इट्स वेरी हैप्पी टू सी दैट. You know, there are many stars who've decided now to move to the Hindi film industry. There are many from the Telugu industry also who have moved. Saptami, a bit of a controversial question. Why do you think that movies, Telugu movies, Kannada movies, Malayalam, Tamil, all of them seem to be doing much better than Hindi films? Like you said, it's a very, even perspectives matter that way. I think people, like, for example, people are now open to every kind of movies. For example, Parasite, that won at the Oscars last year, was put out in Korean. It was a Korean movie. It was put out in that language, but it still did very well across even our nation. So I think when you're trying to, I think we should never let go of our roots. And when you bring that out, when you bring that essence out, people are connecting more to it. So I'm sure, for example, in Mumbai, Ganesh Chaturthi is such a big festival here. So if there are stories around that and people bring out those stories, I think even the Mumbai audience or even down the south, people will be more willing to watch it. And it's not that Bollywood movies aren't doing well. Like, for example, recently Gangubai did really well even down south. Yeah. So I like Sir said, now there's no language barrier as such, and people are waiting to watch good content. So even the audience perspectives have changed now. It's not just the language. If you're right. I think language is no longer a problem, right? Yeah. You either see it dubbed, you see it with subtitles, so everyone gets to see all content. But the question is, Rishab, why is it that the Hindi film industry is not able to produce as good content as many of the filmmakers, like S.S. Rajamouli, like yourself, like so many others that I can name here? At the end of the day, you look at Hindi films and compare them to a Bahubali, to a KGF, to a Kantara, they're not matching up. Why is it that content that's coming in from the South film industry seem to be much better right now? Would you agree at least it's better? है ना? I think it's a circle. ये season जैसा, आम का season, बनाना का season ऐसा वो चलते रहता है। उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी फिल्म का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जमाने से हम लोग देख के आ रहे थे, ये हिंदी फिल्म जो स्केल, जो स्टोरीज देखते थे हम लोग, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लेजेंडरी कलाकार है, बहुत अच्छे अच्छे लेजेंडरी डायरेक्टर्स भी है इधर। आई थिंक ये तो हर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम था। मतलब अभी कन्नड़ा ऐसा कर रहा है, इससे पहले 10 साल पहले हमको ज्यादा मानते नहीं थे। तेलुगु का भी डाउनफॉल था, अप्स एंड डाउन्स आर देयर। तो वो हम क्या है ना, एक सक्सेस आ गया तो ये मन में लेके हम इधर रख के ये सक्सेस किया, हम लोग ये करते हो करते नहीं, फेलियर भी वैसा ही आता है। ठीक है, दोनों हम इक्वली लेना है। आई थिंक इधर का जो फिल्म मेकर्स है, ये हिंदी सिर्फ एक स्टेट नहीं है, पूरे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे जगह हिंदी बोलने वाले लोग हैं, हिंदी समझते हैं। उधर का भी जो रूट्स का जो कोर कंटेंट लेके आके ये लोग मतलब प्रेजेंट किया, तो फिल्म बनाया तो लोग डेफिनेटली देखते हैं, उसमें कोई ये नहीं है। No, if I were to give you an example, see, very often when I spoke to a lot of experts about this, they said that it's because these filmmakers go into issues that are very close to people's hearts, traditions, cultures, like your film also, and does justice to it. So you see a latest Hindi film trailer that's come out with Prabhas, Adipurush, and it's about the epic Ramayana. So it's a story that we all know, we hold very dearly, but a film like that, if it was done in the South, would be hailed. Now in the film industry, in the Hindi film industry, there's a lot of questions, a lot of controversy over it, because they're saying that Ravan is being portrayed in this way and that way. So do you think that there's a lot more controversy in the Hindi film industry unnecessarily? नहीं, हर जगह है ना वो controversies, किधर नहीं है।
हर जगह होता है। अभी अभी क्या है ना, अभी सोशल मीडिया आने के बाद लोग उनका व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। उनको क्या क्या हो रहा है, क्या कैसा कैसा लग रहा है, वो सब उन लोगों का पर्सपेक्टिव है, उसमें मेरा कमेंट्स नहीं है। जो हर जगह है, मतलब अभी सोशल मीडिया इतना ये है, उसमें इतना पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लोग स्ट्रेट अवे एक्सप्रेस करते हैं। अभी फिल्म का जो देखने का जो पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। लोग क्या है ना, अभी मैं अभी कभी भी मैं मानता हूँ, बहुत ज्यादा अपडेटेड कौन है बोले तो वो ऑडियंस है। कौन कौन अपडेट नहीं हुआ है, हम फिल्म मेकर्स और स्टोरी टेलर से। क्योंकि अभी ये मैं कांतारा किया, ये 1 साल का पुराना स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। ये कुछ कुछ चीजें, कुछ सिनेमा बनते हैं, हम लोग 2 साल 3 साल लेते हैं। 3 साल का पुराना स्टोरी हम लोग अभी बता रहे हैं। अभी जो प्लेटफॉर्म से लोगों को, वो लोग ऐसा देख रहे हैं कि अभी अभी अपडेटेड वर्जन का कुछ वर्ड सिनेमा, किसी किसी दुनिया का किसी कोने का कुछ कुछ लैंग्वेज का फिल्म देख रहे हैं, तो वो लोग अपडेटेड है। अभी जो लोग फिल्म देख के रिव्यू करते हैं, कैसा है कि एडिट के पर्सपेक्टिव से, वीएफएक्स के पर्सपेक्टिव से, स्टोरी, नरेशन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एवरीथिंग, परफॉर्मेंस, तो कॉस्ट्यूम्स, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में वो लोग बात कर रहे हैं। मैं इसलिए, हमारा इंडियन सिनेमा का स्ट्रेंथ है, हमारा कोर, हमारा जो रूट्स है, हमारा जो कल्चर है, इसी को लेके आने का है। वो हम भूल नहीं सकते, भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि दूसरा लैंग्वेज का कुछ हम लोग देखते हैं, लाइक शायद वाइकिंग्स में जो बोलते हैं, उन लोगों का जो कल्चर दिखाते हैं, प्रॉपर हमारा इंडियन कल्चर जैसा है। उधर टेम्पल भी है, जो उन लोगों का रिचुअल भी वैसा ही है। हमारा मन में, अगर इंडिया छोड़ के बाहर गए तो एक ही तरीके से हमको सोचते हैं हम लोग, वैसा नहीं है। हमारा जो कोर क्या है, उधर जाना है, वो वैसा स्टोरी लेके आना चाहिए। हमारा जो सॉइल का जो स्टोरी है, वो लेके आना है। वो आपको किसी का प्लेटफॉर्म में भी नहीं देखने से मिलता है। वो सिर्फ आपका गांव का स्टोरी है। वो उधर के लेके आके दिया तो लोगों को पसंद आएगा। लोगों को, मतलब ये स्टोरी में नया नया नहीं है। मतलब हम क्या क्रिएट करते हैं, बोलते हैं हम लोग क्रिएटर, वी कांट क्रिएट एनीथिंग। नेचर में सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ है। हम लोग उधर से इन्फ्लुएंस होके, उधर से देख के वो हम रिक्रिएट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। But Rishabh, with all this that's being talked about, and so many of your colleagues also venturing into Bollywood, is that the next step for you? Next Bollywood film? No. I want to make films in Kannada. Okay. So make in Kannada and dub in Hindi? हाँ, वो अभी लोग इतना ओपन है, इतना प्यार दे रहे हैं। अगर हम कुछ नया कुछ बताए तो ओपनली ले रहे हैं। एंड वो क्यों, अभी कांतारा को इतना रिकॉग्निशन आ रहा है, हमको इधर लेके आके डब करके रिलीज करने के लिए इतना लोग का भी हेल्प है, पब्लिसिटी भी ऐसा कर रहा है। क्यों है कि मैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री आया हूँ, उधर मुझे लाइफ मिला, मेरा कहानी बताने के लिए स्टेज मिला, मुझे सब कुछ दिया है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री। आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू मेक फिल्म्स इन कन्नड़ा। सब फिल्म, सब कंटेंट, कुछ कंटेंट चीजें मैं लेके आके दुनिया को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। कुछ चीजें लाइक लास्ट फिल्म व्हिच आई हैव डन called सरकारी हिरिय प्राथमिक शाला कासरगोडु, it's about Kannada schools in a border area. Okay, that films can't dub in Hindi and other language. Agreed. क्योंकि एक केरला कर्नाटक का बॉर्डर में जो कन्नड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, उधर का कुछ बताने जा रहा हूँ। उधर का जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स क्या है उसके बारे में था, वो कन्नड़ा में ही देखना चाहिए। 100%. I'll agree with you. I'm very happy that you said that, because it makes me immensely proud that you're saying I will continue to make Kannada films as well. Saptami, before I wrap this up, I feel always proud. Please. I'm Kannadiga. I 100%. I'm sure you do, and it's shown clearly, not just in this movie, but in your answer just now when you said I will continue to make Kannada films. That's great to hear. Saptami, before I wrap this up, your message to the audiences, for someone who's, going into the theatre with an open mind to watch Kantara, what would you tell them about the experience they're going to be witnessing? You're going to have the best experience of your life when you're going to go watch Kantara. It's going to take you. So we've created a world for you called the world of Kantara. So you're going to experience the world of Kantara along with the characters. You're going to become one of the characters in the village, and you're going to experience the culture with us sitting at the theatres today. So you're going to 100% come out, be in that world, and when you come out of the theatres, you're going to be left, with the thought process and with an amazing climax too.
I think the reviews also largely speak for themselves. Rishab, final question from you as well. Your message to the audiences on what to expect from Kantara, and I also want to know from you what's next. वो पता नहीं, मोस्टली 2 महीने छुट्टी लेके बीवी बच्चों के साथ भाग जाऊं, सो 2 महीने के बाद सोचता हूँ. बहुत साल हो गया उन लोगों को टाइम नहीं दिया मैं. तो मैसेज या टेक अवे, you will experience a very beautiful positive energy in the film. So आपको एक हमारा जो कल्चर क्या है, हमारा रिचुअल क्या है, हमारा बिलीफ क्या है, जो हमारा जो भारतीय संस्कृति क्या है, ये रूटेड क्या है, ये रीजनल रूटेड हम बोल रहे हैं, कोर बोल रहे हैं, क्या है ये, इसमें एक भगवान का जो शक्ति है, मतलब डेमी गॉड कहते हैं हम लोग, दैव पंजुर्ली, दैव गुलिका, वो हम मानते हैं. वो एक बहुत अच्छा एनर्जी. सो वो एक शूट करने समय में भी वही फील हो रहा था मुझे, एक शक्ति, एक एनर्जी मुझे प्रोटेक्ट जा रहा है. वही एनर्जी स्क्रीन में ट्रांसफर हो गया, वही एनर्जी स्क्रीन से ऑडियंस को ट्रांसफर हो गया. आई थिंक यू विल एक्सपीरियंस दैट. Thank you so much, Rishab. Thank you, Saptami. Congratulations again for the amazing response. I'm sure now when I'm speaking to you, you've already reached a high. Next week, you'll be reaching another high and another after that because of the great reviews and experiences that people are speaking about on social media about this film. Thank you so much for joining us here on India Today. To all of you watching this broadcast. Thank you so much. Yes. That high is dangerous, so let's be in a ground. For sure, remain grounded, and because of that, I'm hoping you both will join me very soon. Also, I'm sure once this film breaks all records very soon. To all of you watching this broadcast, watch this film, Kantara. It sends out a very important message. It's about our culture. It's about Indian traditions. And we all should be trying to learn more about every single part of the country. This one is about coastal Karnataka, and it's an unmissable story. Thank you very much for joining us. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.